Friends, how are you? Yesterday we completed reading files and read mode. So today we'll start writing onto the files, writing modes of the files. So appending is the same of both are the things. So how can we create? So first I want to add a simple file. Create a file to hold सम डेटा, यानी कि एक फाइल हम बना रहे हैं, इसमें डेटा को होल्ड किया जाएगा. सो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ एफ आउट, दैट मीन्स फाइल आउट, यानी कि आउट ओपन कमांड. दिस इज द माई फाइल नेम, दिस इज द फाइल नेम एंड दिस इज द ओपन कमांड. तो एवरी फाइल हैव टू ओपन. सो डी ड्राइव, आई जस्ट ओपनिंग अ फाइल student student dot text dat file I am making dat which mode, write mode. So this is the our declaration for write. So I am just using for loop for I in range of 5 students, 5 data where I am using. Now name, enter, input, enter name of the student. सो स्टूडेंट का नाम मुझे एंटर करना है यहाँ पे फर्स्ट. देन उसके बाद एफ आउट डॉट WRIT राइट कमांड एंड कोड नेम माई वेरिएबल इज हियर एंड देन आफ्टर क्लोज द फाइल. सो एफ आउट डॉट क्लोज. दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन, राइट टू फाइल एंड एग्जीक्यूट. So name, enter the name. Suppose one name is Umesh, another is Rajesh, Rakesh, Harish and Sumit. These are the 5 names. So friends, already written this form. So where it is exactly written, so I just go to the my drive, D drive, file name, my file name is students. So I just use students files. Okay, this is the dat file, you can see that, and I open, just right click and open mode, that is open file, and select program and maybe using notepad. You can see that Umesh, Rajesh, Rakesh, Harish and Sumit, 5 student name is here. Okay, so you can see that how can we enter. If you want to enter, just put new line command, that automatically change the new line text. So I execute once again. Okay, Rajan, Rajan, Meena, Kavita, Sumita and S Chand, CHAND. So now you can see that output of that file. This is the file, and Rajan, Meena automatically update that file, because this is the mode every time, right? What I do, if a file not exists, that means create a file, and if file exists, that will replace the file. Got it? So this is the write command. I think you are understand how can you write the program. So नेक्स्ट दिस इज द आवर. अब एक छोटा सा कमांड इसमें जो हमें लिखना है, वो लिखना होगा कि जो मुझे डेटा मेरा लाइन बाय लाइन चाहिए. तो एफ आउट माई ऑब्जेक्ट नेम डॉट राइट एंड ब्रैकेट स्ट्रिंग न्यू लाइन. सो व्हेन आई जस्ट ट्राई उमेश, अजय, विजय, HARSSR. So 5 name is Mahesh. So friends, I just show you every text should be in a separate line. So only that command, new line command, right, that will be change this thing. So this is the my write function. Now I am using next write line. Write line function, how can we use? So we are making a program, just how to use write line in place of write command.
कैसे यूज करना है. इट्स वेरी सिंपल. It's simple. How can first f out object I am making and open command I am making, and this is the D drive and stu1 student1 dot text date text भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं. and write mode we are using write mode. Okay, now we are making list1 is equals to array. Now for I in range number of 5. Okay, so now name variable we are taking, name is equals to input, enter the name of student student. So हम स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे. देन उसके बाद list list1 डॉट अपेंड. सो राइट लाइन में अगर हम अपेंड करते हैं तो अपेंड कमांड क्या करेगा, name नेम प्लस न्यू लाइन, और न्यू लाइन should be selected inverted comma and okay. Now f out dot write line is right lines, which one, list list1, and next f out dot close. Okay friends, I execute this command, enter Meenal, Vimal, Archana, Karina and save. Okay, so I just show you f dot close फंक्शन गलत लिख दिया है फ्रेंड्स मैंने, सो आउटपुट में जनरेट नहीं होगा. सो करीना RANB रणवीर, KPWR कपूर, नाम एंड सीता. So just I show you this is the stu1 another file, and you can see that a different file is here. So we can easily make a write command through the list command using. So friends, how you know, अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम्स क्रिएट करना है. राइट कमांड में क्या करना है, एक प्रोग्राम्स क्रिएट करना है. सो WAP राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर, names and marks of the students of a class, and store these details in a फाइल. यानी कि एक ऐसी फाइल बनानी है जिसमें डेटा स्टोर हो जाए. फाइल्स कोल्ड marks marks डॉट डेट, यानी कि जो हमें मार्क्स डॉट डेट फाइल बनानी है. ओके, सो हमारी फाइल का नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन सी होनी चाहिए, मार्क्स डॉट डेट. ओके, सो व्हाट शुड आई जी, COUNT काउंट एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, और इंटीजर इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. ओके, ये एक मेरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे. सो व्हाट शुड आई डू, f out my file name, open command use and
D drive and my file name marx marks dot date. My file name is marks dot date. कौन सा मोड है? राइट मोड में होगी साहब. किस मोड में? राइट मोड में. सो आई यूज फॉर लूप फॉर आई इन रेंज. रेंज कितनी होगी? COUNT काउंट, यानी कि जितनी मैं चाहूँगा अकॉर्डिंग टू माई. सो प्रिंट कमांड आई एम यूजिंग एंड एंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट comma bracket I plus 1 comma BELOW below. Okay, so next roll number is the variable we are taking and get an input of integer types. Enter a roll number. Okay, so roll number, when you add the roll number, now after date we are taking name, so just a column type, so we are using only roll number. Okay, roll number. Now name, input only name, name. Now next one, marks is equals to integer input and marks. So friends, marks क्या है? फ्लोट टाइप्स में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी के कम ज़्यादा हो. Okay, so our detail is complete. Now we use record variable string roll number plus comma plus name. Now plus comma, now plus str case marks, now plus new line. So this is our code. Now f out dot write rec record, and now last one f out dot close. So friends, we are getting this type of file. So first we initialize the variables, open the file, and that does this. Now I execute the file. First, how many students in your class? I set 4. I set 3. So roll number 1001, name Ravi, marks 87.5. roll number 1002, name Ajay, marks 81. So what should be error? Was file f out dot write input output error. Shall we check again what was the error? I am not getting. Once again I will start the code. Okay, 3 student is here. 1001, name RAVI, 87.5. 1002, name Raj, 75.6. Okay, f out dot write input output operation on close a file. Error is giving input output operation close the file error it is giving. So f out dot write command, WRITE. I think I am just writing write command. It is valuable. Okay, so this command is not used at that time. So first roll number, name and marks and record is here. Okay, now f out
dot close dot write. Wait a minute. So friends, next name is Ramesh, Ramesh, and once again it will be give the. So friends, are you watching what is the error? Because I put Ramesh at that roll number place. So I once again try this output. Okay, roll number, student number of 3, and I put roll number 1, student name A, marks is 56.5, and roll number is 2, and the name is BB, and marks is 78.6, and roll number is 3. Okay, name is CC, then marks is 87.5. Now see the output. I think it is clear. Okay, so not an error, only just the indentation error first time we are taking. Indentation will have to shift, and then you can see the output of file name is marks. So we just go to the press the marks, M for marks. Okay, this is the marks. This is the date file. Open with. Okay. Now you can see that student record, it should be there. Are you getting my point? So these are the files we can access through the write and read mode and number of records. And suppose in this file we use append mode. Okay, if suppose this file we are making in append mode, so I am just making a program ki WAP, write a program to add 2 more students, add 2 more students details to the file created mar marks dot date. सो हमें क्या करनी है, 2 रिकॉर्ड और क्रिएट करने हैं, यानी कि अपेंड करने हैं. सो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला कोड यहाँ से हटा देना होगा. अब मेरे पास क्या बचा, एफ आउट मार्क्स डॉट डे. अब मोड मुझे चेंज कर देना, अपेंड मोड कर देना. लूप वही है, तो यहाँ पर मुझे काउंट कीजिए कितना, 2 रिकॉर्ड और एंट्री करनी है. ठीक है, प्रिंट कमांड सेम है, इनपुट output everything should be same. So we execute. Now our next number is 4. Okay, and name DD, marks 78.353. Next 5, name EE, and marks is a 92.4. Okay, so we just gone through our table. Okay, and student table is there, marks table, our marks table, this is the marks table, and you can see that append mode is working. So we can multiple things we can add through the append mode. So friends, are you getting my point? So next, this after some few function is here, the FLUSH flush functions. So friends, आपको यहाँ तक फाइल हैंडलिंग का समझ में आ गया होगा और बहुत इजी प्रोग्राम है. अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फ्लश फंक्शन की. सो फ्लश फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में? फ्लश फंक्शन होता क्या है फ्रेंड्स कि पाइथन टू राइट द कंटेंट, यानी कि वांट टू फोर्स, यानी कि कुछ ऐसा काम होता है कि व्हेन यू राइट ऑन टू फाइल यूजिंग एनी राइट फंक्शंस, सो दैट मीन्स इफ यू want to force Python to write the contents of the buffer onto storage, यानी कि बफर स्टोरेज में when you want to the, so
you can use flush फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जब आपको फोर्सफुली किसी बफर स्टोरेज में कुछ ऐड करना हो तो वहां पर आपको फ्लश फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी यूज फ्लश? इट्स वेरी सिंपल। सपोज वी आर मेकिंग f इज इक्वल्स टू ओपन एंड f इक्वल्स टू ओपन डॉट डी ड्राइव में आउट डॉट log file we are making. So this is the w plus, यानी कि राइट प्लस, यानी कि अपेंड मोड, बाइनरी मोड, अपेंड एक्स्ट्रा मोड चल रहा है। सो f डॉट writ राइट the thought is new line, then f dot write my plus work status status. Okay, and plus, so plus, okay, is, so this is the, now we can use f dot flush flush functions, and s is equals to okay, and f dot write as f dot write new line, and last one is f dot write finally over, and then f dot flush and f dot close close. So friends, how to use buffer? So suppose we are making this file and then after we want to add this file, so forcefully we are adding on the buffer files. So execute this file and you can see the output. This is the D drive file, we are going to D, and this is the out of log, that is the file. You can see the thought is finally work status is okay, you can see that, and finally over. So mic work status is okay and finally over. So both of the file it can be merged, a medium of using of flush function. So friends, these are the files we can use, number of things, and next function is removing white spaces after reading from file. So friends, इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने पढ़े हैं पहले भी, जैसे कि read functions, read lines from line functions, and read lines functions. So we are using this function also. And how can we remove this things? So we are having some functions just like a strip functions. What is doing strip functions? removes, removes the given character from both ends, यानी कि दोनों साइड से कैरेक्टर्स की स्पेस को रिमूव कर देते हैं। R strip सिंपल है फ्रेंड्स, रिमूव द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड्स। सो मैं ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो R for RIGST, राइट साइड। ओके, सो राइट एंड या राइट साइड, राइट एंड भी लिख सकते हैं हम।
Okay, and now LSTRIP, left strips, friends, that means remove the characters from left end. So so friends, these are the functions we are using of this command. Tomorrow I'll definitely tell you, because today's time, class time is over, so we'll meet tomorrow. So please like, share and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon. I hope you are watching. Thank you. Have a nice day.